guys, welcome back to my channel. This is me, it's Aisha Online with another video. I know that I have been away for a long time and I don't upload on time, and I'm uploading like after like 10 days और 2 weeks. इस तरह से कुछ टाइम हो गया है. January, February का पूरा 2 महीने I've been so much busy with workload. I had appointments, I had to go out of city, and it was so much workload that I couldn't give proper time to my channel, and which is why मेरी videos भी delay होती जा रही थी. Now that I'm back, I'm gonna be start filming very interesting videos for you all, और मैं इंशाल्लाह अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हफ्ते में 2 नहीं तो 1 वीडियो तो आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड किया. So guys, today's video is going to be about full face of using Miss Rose के makeup products. Miss Rose is a local brand. I'm sure आप सबने उसका नाम सुना होगा. It's a Chinese local brand and it's available in Pakistan very easily. Like हर shop पे every online store has Miss Rose के products. So I have tried half of these products on my face and I'm very satisfied. The quality is very good. Like this is the best local brand I have ever used on myself. तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी जो आप लोगों के लिए अच्छी ना हो. So I will be sharing my thoughts about all of these products जो मैं आज यूज़ करूँ. Majority मैंने यूज़ कर लिया हुआ है और बाकी we will test today. So guys, before I dive into my video, I'm gonna be using few skincare products so I'm gonna try out for the first time as well. ये Miss Rose के नहीं है, they are just local Pakistani products. So the first product I'm gonna try out is this glowing and brightening serum, which is by the brand called Beauty Bench. They're very nice and all of their products are really good. ठीक है? तो this is what it looks like. This is a glowing white color का serum जो आजकल बहुत trendy है, and I'm trying to try this on my face. Slowly. So guys, this has like nicely absorbed into my skin and definitely has given me a nice moisturized kind of a look. Second product I'm gonna be trying out is this Bisou. This is a Vimsy Beauty ka eye serum, under eye serum. I'm gonna try this out today. I'm gonna take some of it on my back of my hand. अब चलते हैं actual products पे. So the first product I'm gonna be trying out this Miss Rose का Photo Finish Foundation Primer. This product is very good. It's an oil-free formula, silicone gel based है, ideal for people who love कह रही हूँ, who have oily to combination skin. Dry skin वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन best ideal है ये oily to combination skin के लिए. I'm gonna take this back of my hand. I'm gonna gently apply this all over my pores and nose. Majorly जहाँ पे मुझे pores का issue है और जहाँ पे मुझे oil ज़्यादा feel होता है. Guys, इसको correct करने के लिए मेरे पास कोई product नहीं था, तो I'm gonna use my own कह रही हूँ, Glamorous Face की ये stick आती है. You all should know कि this is the only product I use. I like to use for my pigmentation. So now guys, correcting is done. अब हम foundation use करेंगे. Foundation आप सबको पता होना चाहिए कि how much I love this Miss Rose की foundation. I'm in the shade beige 2. So we're gonna apply this now. I'm taking my beauty blender by Beautify by Amna.
already see the finish of this foundation. ये थोड़ी सी ऑक्सीडाइज होती है, like मेरी स्किन से सिर्फ एक टोन. The concealer I'm taking Miss Rose का ही concealer. This is in the shade Ivory 6. I normally use beige too, लेकिन since I want more highlighted under eye areas, तो मैं Ivory 6 use करूँगी. Foundation and concealer have been applied. Now I'm gonna set my face. Now I don't have a face powder by Miss Rose, but what I'm gonna do is taking this contour kit by Miss Rose, जो मैं बाद में भी contouring के लिए use करूँगी. उसमें ये वाला shade है. This I'm gonna be using the powder to set my face. So once I have powdered my face, I'm gonna be using this Miss Rose की contouring kit. As this is my current favorite contour kit, Miss Rose की. ये मैं अपने clients पे भी use करती रही हूँ, खुद भी use करती हूँ. This is so good. You can see it has 8 shades. Contain करती है palette. It has like एक दो तो highlight shades है, एक highlights भी है. As you can see this one. Taking this shade last वाला. I'm gonna be using blush on. So we have another Miss Rose की blush on palette. So this is what it looks like. This is the Miss Rose की blush on palette. इसमें भी 8 shades आते हैं. Like every shade you name it is in this palette. Peach shades, dark shades, you know, we have it all in this palette. तो इसमें से I'm gonna be taking this shade 3 पे, ठीक है? And I'm gonna apply this on my cheeks. Now it's a time for setting spray. So I am currently using this Miss Rose का makeup fixer, which is really good. This has aloe vera with vitamin E in it. Both of the things are very important for your face. So I'm gonna set my face. सेपरेट हाईलाइट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट आई एम गोना बी टेकिंग इसी कॉन्टोर पैलेट में ये वाला शेड. दिस इज द हाइलाइटर. इसके अंदर जो है, यू कैन सी हाउ बीमिंग दैट इज. I'm gonna be using this Miss Rose की eyebrow kit आती है. This is called eyebrow powder plus eyebrow cream. Like it has like eyebrow pomade and powders as well. 3 shades दिए हुए हैं इन्होंने बीच में से, ठीक है? तो I'm gonna be using this, like mixing both of these. At the same time, I'm gonna prime my eyes. Brows are done and my eyelids are all primed. Now I'm gonna be applying the eyeshadows. The eyeshadow, I'm gonna be using this Miss Rose की 12 color eyeshadow plus 6 color glitter palette. I'll show you how this looks like. What this looks like. It has like, ouch.
हाफ शिमर्स हैं इसके अंदर, हाफ ग्लिटर्स हैं. तो आई एम गोना बी टेकिंग दिस शेड एज माई ट्रांजिशन. I'm gonna take a darker brown shade, which is this one. ये वाला शिमर जो है मैं अप्लाई करूंगी इसको अपनी लिड पे. फॉर द आईलाइनर आई एम टेकिंग दिस मिस रोज का आईलाइनर है. इस कॉल्ड ये स्टेम्प लाइनर है. लाइक इसमें आप लोग एक स्टेम्प भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे विंग का स्टेम्प. आई विल शो यू हाउ दिस लुक्स लाइक. दिस इज द विंग साइड. इस तरह स्टेम बन के विंग लग जाता है. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक दी दूसरी साइड से आप लगाओ अलाइनर को. You see? सो यू सी इस तरह इसको अप्लाई करना है. स्टैम्प लगा के लाइनर का बाहर. देन यू कैन यूज़ दी दूसरी साइड. तो जिन लोगों को विंग नहीं लगाना आता दे कैन यूज़ दिस लाइनर. लैशेस में यूज़ कर रही हूँ अपनी ऐश ब्यूटी की बोल्ड लैशेस. ठीक है, दीज लुक सो हॉट एंड आप लोग परचेज कर सकते हो मेरी पेज से. मैं सारा लिंक कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आई एम गोना अप्लाई द सेम डार्क ब्राउन शेड इन माई लोअर लैश लाइन. और फिर हम वाइट पेन से लगाएंगे, वो भी मिस रोज ब्रांड की. इट्स सो गुड गाइज. मैं भी दिखाती हूँ आपको लगा के. दिस मिस रोज की आई पेंसिल, ठीक है, वाइट में. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. तो आई एम गोना अप्लाई दिस. आप लोग देख सकते हो कि द वाइट पेंसिल लुक्स वेरी गुड. अब मैं यूज़ करने लगी हूँ लास्ट चीज़, वो है लिपस्टिक. दिस इज़ दी मिस रोज की चबी लिप क्रेयॉन इसका नाम है, ठीक है. इट्स इन द शेड कॉल्ड सैटिन रिबन. Guys, it glides on the lips so beautifully. It moisturizes your lips and at the same time ये full pigment लगता है lips पे. Like full, it gives you a very opaque look. Guys, this is the final look. I really hope that you enjoyed this full face of Miss Rose products. You can see how flawless my face looks right now. The foundation is my favorite, the concealer is my favorite. I love the new technique by Miss Rose, ये जो उन्होंने stamp वाला eyeliner लगाया है for people who can't, properly draw the wing liner. You can see how subtle and gorgeous my eyes look right now, and the lip color is amazing at the same time. और brows भी बहुत मजे की लग रही हैं. तो I'm really happy. And how can we forget the blush and contour? Like everything is on point, guys. This video is not at all sponsored. मतलब मेरे face पे चीज़ें लगी हैं और मैं अपने face पे कुछ ऐसा नहीं लगाऊंगी जो मेरे face के लिए बुरा है. तो this is not sponsored. All of the stuff is by Miss Rose and it's something I love using. ये प्रोडक्ट सब कहाँ से मिलेंगे? ये मेरा अपना पेज है. इट्स कॉल्ड लोकल मेकअप पाकिस्तान. इट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मी, जहाँ पे सारे लोकल ब्रांड्स, चाइनीज़ ब्रांड्स आपको इजीली मिल जाएंगे. मेरा पेज फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का, मैं जो अकाउंट्स मेरे जो हैं वो मैं लिंक डाउन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो यू कैन ऑर्डर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर. और वहाँ से आप लोग, वहाँ पे मोस्टली मैं ही रिप्लाई करूँगी, मैं ही डील करती हूँ अपने कस्टमर्स को. तो आप लोग मुझे जो कहोगे मैं आपको ईजिली डील करूँगी, ठीक है. आपके स्किन टोन के हिसाब से कौन सी फाउंडेशन लेनी है, क्या प्रोडक्ट लेना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड देयर. आई विल रिप्लाई
you all by myself. So guys, I hope you enjoyed this tutorial. If you did, then do like and subscribe to my channel. ज़रूर कमेंट करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें, बुरे अच्छे जैसे मर्ज़ी, फीडबैक आपका बहुत मुझे मैटर करता है। और या मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, आप जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। और मैं इंशाल्लाह आई विल बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। सो टिल देन टेक केयर।